So thank you for back, everyone. Uh, in the last class, we have discussed about audit report, difference between audit report and certificate, and the reporting responsibilities of auditor, statutory auditor, and also contents of CARO report. So a brief summary of what we have discussed. Auditor cannot give absolute assurance. That is why we will issue audit report. We will not issue audit certificate. The difference, because we will not certify any fact, we will express an opinion, because of which we will issue audit report and we will not issue audit certificate. The major difference between audit report and audit certificate is this. And the different responsibilities that are covered in Companies Act, the reporting responsibilities, where auditor has to mention whether he has obtained sufficient and appropriate audit evidence, whether he has obtained all the relevant information or not, whether branch summary reports have been received or not, whether the loans given are in, whether the financial statements are prepared in compliance with standards of accounting or not. All those policies we will check, and whether there are any transactions, whether the dividend has been transferred to investor education within the time. All these points we will check and we will report. In case of negative report, we will negative observations, we will give negative observation. In case of positive, we will give that we have verified the same and nothing has been found. Like that, in CARO also we have seen 21 items in which auditor will report. What are the 21 items? Non-current assets, inventories, loans made by the company, investments made by the company, then loans to directors, investments made by the company, then statutory dues, acceptance of deposits. See here, I am just revising what we have discussed in the last class. These are the contents of CARO report. हाँ, in the last class. इतना तक खत्म हुआ है, मतलब एक चैप्टर तो छोड़ दिया है, लास्ट में इसके 8 चैप्टर के साथ कवर कर देते हैं. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 8.5 सॉरी 7.5. ओके 7.4 को छोड़ दिया, इसको लास्ट में कवर कर लेते हैं. जो 8 चैप्टर के वो पूरा लिंक्ड होता है, पूरा कॉन्सेप्ट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एफएस and different types of entities, how we will audit in practical scenarios, we will discuss in it. So in these cases, these are the contents. Non-current assets we will report on whether the contents reflect whether proper records have been maintained or not, whether at periodical intervals being verified by the entity or not, any discrepancies found, whether properly adjusted in the books of accounts or not. Inventory cases also, we will check whether physical verification is carried out at reasonable intervals or not, proper records have been maintained, whether any discrepancies found more than 10%, whether they have been properly adjusted in the books of accounts or not. And sometimes, if in case of bank loans from banks, we will obtain overdraft facility. Overdraft facilities will be given based on inventory and trade receivables. Then the returns filed by the client to the banks, we will match the returns with the books, and we will find out if any discrepancies, we will report on whether any discrepancies are found or not. So I will just explain what we will do. See, in case of inventories, overdraft facilities business will take based on what? Based on the trade receivables, they will show to bank, we have this much receivables, we have this much inventory. Based on this, taking the security of these providers loan, we will discuss with bank the terms of agreement. Then every quarter, bank will, if some limit of 5 crores, some 50 lakhs, they'll, based on the bank's limit, they will ask for quarterly return certified by auditor.
that we have this much of stock this quarter, we have this much of trade receivables this quarter, so that they will renew the limit. So for suppose there are 5 lakhs debtors as on date, and bank has decided to give us 60% of 5 lakhs. That means 3 lakhs we have overdraft. In the next quarter, it has become 10 lakhs. Then 60% of 10 lakhs will be 6 lakhs. To renew from 10 lakhs to increase the overdraft facility, some should certify that there are 10 lakhs stock in our, that the auditor will do. Based on that, the same auditor, the statutory auditor might not do that. So the return submitted to bank. So this return, suppose they have submitted on, the 5 lakhs has been submitted on, suppose 10th June. Okay. Next, this 10 lakhs report has been submitted on 10th September. This 7th September, the stock report should match with your close inventory record on 10th September. That is what here the point is mentioning. Whether during at any point of time the company has been sanctioned working capital, if there has working capital facility or order facility in excess of 5 crores, then the auditor should check whether the financial institutions, the current assets, quarterly returns and statements filed by the company, what are the quarterly returns that are being filed by the company, are in agreement with books of accounts or not. This will be checked by auditor. He will obtain what they have filed with banks, and he will, on which date they have filed, on that date he will look out the stock record, whether the both the same are agreeing or not, he will check. Then investments providing guarantees, what he will check in that? Investments providing guarantees, basically we will check terms. If any loans we are giving, whether they have been favorable to the terms in terms of company or not, whether the guarantees are provided. If they are unfavorable, you need to report the terms are unfavorable to the company. Any loans issued, whether proper amount has been received, matlab regular payments are being received or not, repayments are regular or not. If there is irregularity, overdue payments are there, we will ask whether proper action has been taken by the company to recover the amount or not. All these points we will check by the auditor and mention in his CARO report. And also loans to directors, maximum loans to directors will not be there. Investments made by the company, company can make the investment based on certain limits. Whether the compliance with section 185 and 186 of Companies Act have been complied or not, we will check. Acceptance of deposits. In case of acceptance of deposits also, company will accept deposits, and the purpose for which deposits have been accepted, whether they have been utilized for that purpose or not, whether the provisions of 73 and 76, the provisions relating to acceptance of public deposits, whether they have been complied or not, and in any other additional complaints issued by National Company Law Tribunal and Company Law Board, whether they have been complied or not. The auditor will check and report. If there is non-compliance, he will report here. Even if there is compliance also, all the stipulations or regulations issued by Company Law Board or National Company Law and the provisions of section 73 and 76 of Companies Act have been complied. Cost records, we have been already studied the cost records. If the cost records of maintenance of cost records is applicable to the company, then the auditor will maintain whether proper cost records as per specified as per section 148 have been maintained or not. They will report. Statutory dues. In this statutory dues case, we have studied though. क्या है वो? Undisputed and disputed. Undisputed statutory dues, the company should be regular in depositing the statutory dues to statutory audit authorities. If any undisputed statutory dues not deposited for a period of more than 6 months as on the end, at the end of the financial year, then the auditor should report, separate report the auditor should make. In case of disputed statutory dues, the auditor should mention the forum where the amount of litigation and the forum where the dispute is pending. Suppose at Guwahati High Court there is a litigation of payment of VAT liability of 10 crores. You need to mention that VAT liability 10 crores, dispute pending at Guwahati High Court.
Like that, the auditor should prepare a statement and mention disclosure of unrecorded income. What the auditor should disclose? Sometimes uh, some income might be escaped from disclosing in income tax returns. Then बाद में assessment होगा, income tax assessment. Then the income tax authorities, after investigation, they will come to know that some income has been escaped from submission in returns and tax liability has been assured. They will ask you to pay the tax. Then how the escaped income has been brought to books of accounts? Auditor will check whether the proper treatment for undisclosed income, previously it is undisclosed in the books, so that the income has been escaped from tax liability. Now whether the same has been adjusted in the books of accounts, proper disclosure have been made or not, proper adjustment in books of accounts for the unrecorded income, previously unrecorded income have been properly recorded in books of accounts or not, we will check. Then again, repayment of loans. Company will take sometimes loans and advances. In that case, auditor will check whether all the loans and advances paid by the company are timely payments. The liabilities have been timely paid, and whether in any case or any bank the company has been disclosed as willful defaulter by any bank. And in case of term loans will be applied for a longer period. They should be applied for specific purpose for which they have been applied. You will check whether any loan applied for other than the purpose for which the loan have been applied. Suppose you have obtained a loan for construction of building, but you are using the loan amount to purchase of inventory. Then the auditor will check and we will report whether any rectifications have been made. The same also will be reported. The amount have been utilized for, later the amount have been reallocated. The same will be mentioned. Funds raised on short-term basis, whether any short-term funds have been used for long-term purposes. Normally, long-term funds can be used for short-term purpose because the period is long, the company can ensure repayment. But the short-term funds using for long-term purpose, matlab the result, the income generation capability will be in oncoming future. At present, it will not generate any returns. The company might be at no cash risk. It might incur for upcoming liability. For repayment of upcoming liability, the company might in a cash out situation, because of which the auditor need to check and report on whether there is any funds used for long-term purpose or not. In other cases, whether any loans have been issued for subsidiaries or loans have been issued, but the loans have been taken from other persons. For to make investments in subsidiaries or joint ventures, we are obtaining loans. Whether in such cases, the auditor need to give the details whether any such transactions in company or not. Then utilization of IPOs. Sometimes the companies will raise funds from initial public offer and further public offer. The purpose for which the funds have been raised, whether utilized for those purposes or not. Whether any other misappropriation or any other utilization for other purposes, the auditor should report the purpose for which they have been utilized and the amount of purpose other than the purpose for which the funds have been raised. Reporting of fraud we also read. As per Companies Act 143(12), the auditor should report on if the fraud is more than 1 crore. The auditor should report amount involved in fraud, parties involved in fraud, and the explanation obtained from the management. What the explanation provided by the management, all this he will mention in ADT4 and he will send to central government. Nidhi company. These are all specific company related. I will not go much into. But what is Nidhi company? I will explain. Nidhi company means some group of people will form. They will pool some amount and they will deposit their savings, and it will act like cooperative bank. We will deposit some amount of 1 lakh and you have 9 lakhs more. You will deposit your savings. I have 5 lakhs more. I will deposit my savings. You have 10 lakhs more. They will deposit, and she has usage of 15 lakhs. She will take loan. The company will, the Nidhi company will rotate amount like that. But there are certain criteria to maintain the short-term liability. Suppose you came and you asked, I want to withdraw my saving account deposit. Then there should be some liquidity. To ensure that liquidity, they have stipulated some conditions. Whether the
conditions stipulated have been complied or not. The auditor should check 1:20 ratio of net owned funds to deposit liability, whether the ratio has been complied or not, whether 10% in unencumbered term deposits, whether the percentage mentioned has been maintained in unencumbered term deposits or not, whether there is any default in payment of interest of deposits. You have deposited 10 lakhs, you have deposited 5 lakhs, whether there is any default in repayment of interest, saving bank account interest on your deposit. You have deposited fixed deposits, whether there is any default in payment of your interest. All these you need to check, because you will check the difficulty, cash out situation in the company from all these related party transactions, whether the compliance with section 177, the approval from audit committee for related party transactions, and in case of audit committee not applicable, you will check for provisions of section 188 related party transactions. If there are exceeding specified limit, you will check for whether the provisions of section 188 have been complied or not. And also cash losses, whether the company is undergoing cash losses. Cash losses matlab cash out situation. When your cash flow statement is prepared, if you have negative cash flows, whether the company is facing negative cash flows from the current year and also previous year, then the auditor will report the amount of negative cash flows, which it depicts that the company is facing cash out situations. Cash out matlab it must have profit, but it is unable to generate cash flows from all the sales are growing to trade receivables, payments are upcoming, and we are unable to pay the liabilities. The situation will be cash out situation. Resignation of statutory auditor. If any case a statutory auditor has resigned from his office, the upcoming auditor who is accepting appointment as an auditor of the company, he has to obtain NOC, and he has also obtained the objections and concerns issues raised by outgoing auditor. Why he is resigning? What is the main reason of his resignation? He need to obtain the information. The client is not paying fees. The client has some issues. What are the issues? The financial statements are not proper. The financial statements are not prepared in accordance with the financial reporting framework. In that cases, accepting appointment as an auditor to such a company might be threat to you. So before appointing, you need to obtain take into consideration of information from resigning auditor. Whether the same has been obtained or not, you need to mention in your CARO report. Information relating financial assets and liabilities. If financial assets are more, financial liabilities are less, there is no problem. But financial liabilities are more and your assets are less, you will be in a threat of going concern will become uncertain because of your financial liabilities are more, your upcoming liabilities are more, but you have no assets. You are unable to repay your upcoming liabilities. Then your going concern assumption might be a threat. In this case, you will check and report whether your going concern assumption is working out or not. Unspent CSR amount. All know 2% of average profits of upcoming 3 years. Average profits of preceding past 3 years. The company should spend CSR amount as CSR amount. Whether any committed amount but unspent. Sometimes I will tell that I will construct a building for the poor people. I will construct a library for this society. But for construction, that immediately in 1 year it might not be yet completed. So I will deposit it in a separate fund. Suppose I have deposited 10 crores. I have utilized only 9.5 crores. That 50 lakhs was remaining in that account. I am unable to use it. Whether such amount has been transferred at the end of project, has been transferred to special account or not, the auditor need to check and report. Qualification and adverse remarks. In case of consolidated financial statements, I might be auditing X Limited, but some other person might be auditing its subsidiary hai Y Limited. Whether those financial statements, at the time of consolidation, I will include their financials and I will consolidate into my books of accounts. But if there is any adverse remarks that are material at consolidated financial statement level, but at the individual financial statement level, I need to report that whether there are any adverse remarks in the subsidiary financial statements or holding financial statements,
that might be not material at my level, so that I am not reporting. I am reporting only on standalone financial statement. I am not reporting on consolidated statement. If any adverse remarks, I will mention so that the users of FS might use this information that there is some adverse remarks on subsidiary financials. There are some adverse remarks on holding financials. These are all the 21 areas the auditor will report. So this is what we have discussed in the previous class, and we have also discussed the types of opinion. There are two types of opinion: unmodified opinion and modified opinion. What is unmodified opinion? We have discussed in the previous class. Unmodified opinion, the auditor will obtain if the financial statements are prepared in accordance with generally. These are the points where we will define the criteria for unmodified. Unmodified opinion मतलब the financial statement में कोई material misstatements नहीं है. The financial statement as per generally accepted reporting framework में prepare किया गया है और relevant statutory regulations and requirement के साथ prepare compliance हुआ है. Adequate disclosures have been made in the financial statements. All the things are present. Then the auditor can certify that he will not modify his opinion. He will give clean opinion. Modification of an opinion matlab if the financial statements are not reflecting true and fair view, then he will modify his opinion. Now we are discussing about unmodified opinion. It is also called as clean opinion or unqualified opinion. In all these cases, if these are present, the auditor will issue unmodified opinion. Then how we will define modified opinion? Modified opinion, there are three, actually modification will be of three types. One, you will issue qualified opinion. One, you will issue adverse opinion. One, you will issue disclaimer of opinion. When you will issue qualified opinion, when you will issue adverse opinion, when we will issue disclaimer of opinion. Qualified opinion we will issue when the financial statements are, there are some misstatements in the financial statement, but they are not pervasive, matlab not spread across different line items. They are restricted to only one line item of FS. Suppose trade receivable, they are restricted to only trade receivable. Then we will go for qualified opinion. There are material misstatements and they are not pervasive. The line is very important. There are financial statements. See, this is the table that defines you how you will decide the opinion. Financial statements are misstated, but in the judgment of auditor they are not pervasive because it is restricted to one line item. Then you will give qualified opinion. Financial statements are misstated and they are pervasive, matlab they are spread across different line items. All the line items in the FS are materially misstated. Then you will give adverse. The financial statements are materially misstated for all the line items. Then you will give adverse opinion. In case of inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence, if you are inability, you are trying, you have performed all the procedures, you are unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence, but that is not pervasive, matlab that is restricted to one particular line item of FS. If you are, then you can provide as an exception. You will issue, qualification means exception. You will issue if it is some particular line item or some particular area, you will issue exception, which gives you qualified opinion. When there are material statements, when you are unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence for a particular line item, you will go for qualified opinion. If you are unable to obtain sufficient and appropriate evidence and it is pervasive, if it is relevant to all the FS line items, then you will go for disclaimer of opinion. These are the four circumstances will issue different opinions. These are called modified opinion. In the last class we have not discussed this emphasis of matter paragraph and other matter paragraph. We will start from here. Today's class starts from here. So what is emphasis of matter paragraph? Emphasis, the word itself states we are emphasizing on something present in FS. So there is some information disclosed in FS and you are emphasizing it because of for the better understanding of users of the financial statements. In your audit report you will mention that in the note number 32 the company is starting some new project, so that the upcoming users will use the information
for better understanding of the some expenditure has been incurred at capital work in progress of 30 crores. Why this 30 crores has been incurred? For understanding of the 30 crores better impact, you will give the note number and you will give the reference the management has mentioned here. For your better understanding of this line item, you can read this note number so that the users of FS will get better understanding of FS. Kindly read this. Emphasis of matter paragraph and other matter paragraph. Auditor is in the independent audit report have formed an opinion on the financial things that it is necessary of the user's attention to draw the user's attention, although appropriately presented and disclosed in the financial, that is of such importance that it is fundamental to the users. It is basically useful for the users. It is fundamental. If I have provided, they will have better understanding. It is the auditor's judgment. Auditor will decide. If I have provided with the information in my audit report, the users will have better understanding of the FS. He will determine that and he will disclose in emphasis of matter paragraph. So where auditor will, so we have discussed all the opinions, right? The auditor must disclose 2 points. One is that the matter which he is emphasizing is not a key audit matter. The auditor has not determined it as key audit matter. Key audit matters मतलब हम discuss किया है. Key audit matters क्या होता है? Auditor for better understanding of the his audit report, he will, for better understanding of FS or better understanding of for the users, he will have to provide some information. He will derive that information based on his judgment. The information discussed from the users. I will discuss from management. I will have different types of discussions with management as a auditor. While auditing, I will have different discussions. I will obtain significant information from the management. Those significant information, if I provided to the users of FS, that might be useful. That might not be disclosed in the FS. While preparing the FS, there is notes. They will mention all the information in the notes. But some matters which the management decisions will take, where their thoughts and their decisions, they have some understanding. While examining of FS as a qualified person, I might have got some doubts. I will have involved into discussions with the management. While discussing, they have shared me some information which is of significant nature that if I have disclosed that in my audit report, they will have better understanding of the FS or company operations. Then I will determine that matter as key audit matter. So you need to understand key audit matter matlab, see, key audit matter. क्या होता है? Auditor management discussion से कुछ information लेता है, which in the auditor's judgment is of significant information. This significant information auditor will decide and disclose in his audit report as key audit matter as per SCA 701. Key audit matter. From the discussions with management, the auditor will decide the importance of information and he will decide and disclose in the SCA 701. Either because of his significant decision he will decide, or based on the regulation, law or regulation asks him to disclose the matter as key audit matter, then he will disclose, or it is better to disclose in the public interest. If I disclose, it will benefit all the people, all the users of FS. If these three conditions are satisfied, then auditor will disclose your matter as SCA 701. And where emphasis of matter paragraph will come, it is key audit matter. Where emphasis of matter paragraph will come, there is some information disclosed in the FS. And if I draw some reference to it, I will disclose in my audit report some reference to it. Suppose at note number 2, the company has disclosed that we have incurred a capital expenditure for upcoming expansion of our, suppose it is involved in some construction company. No construction nahi.
huh, some manufacturing company to set up a new manufacturing plant of for 150 crores. We have incurred a capital expenditure. So in order to understand better financials, why the cash was, so last year there is a cash outflow of 100 crores, sorry, cash balance of 100 crores, cash and bank balances. Now cash and cash equivalent balance. Now it is only 25 crores. Why there is short cash balance? To understand this, if I draw the reference of this, there is a investment made by the company, there is an investment project of 150 crores, because of which your cash balance is reflecting. To understand why the cash balance has become less for the users of FS, that the company has invested, which might give you future more returns, more profit to your company. So the better understanding you can derive only by drawing reference. The emphasis in matter paragraph will be useful at that point of time. But when you are using emphasis of matter paragraph, you need to mention that it is not a key audit matter. It is just an emphasis of matter. That is what he will mention as a primary disclaimers will be given, right? One of the disclaimer is that SA 701, that the matter has not been determined as key audit matter, and also because of this mentioning in your audit report, the opinion is not modified. The auditor opinion remains the same. It is not modified. Matlab, it is not a qualification. It is, the opinion is not qualified because of emphasizing on that. That is not a wrong. I am just drawing the reference for your better understanding. So I will mention these 2 points. The opinion is not modified, and as per SA 701, it is not a key audit matter. These 2 points he will mention. And then where you will include in the audit report, we have disclosed the contents. First there will be appropriate title, then there will be opinion, addressee, to whom the report is being issued. Then there will be opinion, what are the opinion you are expressing. Then there will be basis of opinion, on what basis you are expressing your opinion. Then there will be going concern. Then management responsibilities, what are the responsibilities. Then auditor responsibilities will come. Then any significant observations or anything, if at all there, as per law, any other regulations, compliance are there, we will report there. Then signing will come. So at opinion paragraph, below the opinion paragraph, you will mention, see, matter paragraph, appropriate heading, emphasis of matter paragraph, it will be described. Indicate that auditor opinion is not modified. Is here it is not given, I think. Below the opinion of paragraph, we will mention the emphasis of matter paragraph. Below the, sorry, basis of opinion, sorry. Basis of opinion. Opinion, basis of opinion. Then next immediately, you will disclose your emphasis of matter paragraph. So, emphasis of matter paragraph, you will include with separate heading, emphasis of matter paragraph, and you will draw clear reference. I have mentioned, right, note number 32. The management has mentioned, you will mention clear reference to the FS, to the matter being emphasized in the FS. You will always mention a clear reference. Then indicate that opinion is not modified. Because of disclosing this paragraph, the opinion is not modified. You have to indicate in your FS these 3 points. And next, there are some example where you will use emphasis of matter paragraph. Kindly see this. See, sorry, there is an uncertainty relating to future outcome of expected litigation. So there is some uncertainty relating to, management has mentioned that in the notes of accounts, we are now, there is a pending VAT litigation of 100 crores. In the, there is some uncertainty, and we are expected to, we have to pay, we are expected, we have not to pay the, we have reasonable certainty that we might not pay the liability. We will be, chances of winning the case is more from our end. Some information has been mentioned. So for the better understanding of the uncertainty or the litigation of the legal case, we will draw the reference so that they will have better understanding. In this case also, there is a subsequent event that occurs between. What are the subsequent events? Subsequent events means there is a date on which financial statements audit report has been issued, and there is a date on which audit report is disclosed to users of FS. Audit report will be issued, audit report will be signed. Suppose audit report has signed on 20th of, 4th of September. Audit report will be issued on, for example, on 21st of September. The gap between that, there are some significant
events they have been occurred, some major fire loss in the company, which affects the going concern assumption of the company, then what happens? The auditor should at least should issue a public notice of all the, if there is a just changing of financials is not possible, then at least the subsequent events should be appropriately disclosed at the annual general meeting or through public notice. The auditor will treat the subsequent events. He can disclose all this. There are some events occurring balance sheet date, whether proper adjustments have been done or not. Events occurring मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद और बोर्ड अप्रूवल के बीच में कोई चेंजेस हुआ है, उसमें कोई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स या कुछ हुआ है, उसकी वजह से मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है ऐसे ऐसे इवेंट हुआ है, फायर अकर हुआ है, इसकी वजह से हम फाइनेंशियल्स को ऐसे ऐसे मॉडिफाई किया है, पहले प्रॉफिट इतना था अभी इतना हो गया, ये सारा आप डिराइव करके आप यूजर्स को एक्सप्लेन कर सकता है. ये एक एग्जांपल है. एर्ली एप्लीकेशन ऑफ कुछ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है, इसकी वजह से वो उसका मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी है 2026 से, हम इसी साल अडॉप्ट किया, 2025-26 को अडॉप्ट किया. हम क्या करेंगे, हम एर्ली एप्लीकेशन की वजह से इस साल प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर होने वाला था, वही इस साल 10 लाख कम हुआ है, वो रेफरेंस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये मैनेजमेंट ऑलरेडी डिस्क्लोज किया है, फाइनेंशियल्स में नोट नंबर 30 में डिस्क्लोज किया है. You will derive the reference and you will explain the point to the users of FS. This is the one. Then other matter paragraph. What is other matter paragraph? अभी financials understand करने के लिए emphasis of matter paragraph दिया है. अभी audit report समझने के लिए other matter paragraph देता है. Audit report, अभी audit report भी financials के साथ जाता है users को. फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए आप ऑडिट रिपोर्ट में उसके एम्फोसाइज किया है, ये मैटर इधर मेंशन किया है, आप इसको पढ़ के आप अच्छे से समझ सकते हैं. अभी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स होता है, नहीं तो ऑडिट रिपोर्ट अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल देना पड़ता है जो एफएस में नहीं है. ऑडिट रिपोर्ट का इन्फॉर्मेशन जो भी है वो एफएस में नहीं होता है, वो एडिशनली ऑडिटर ने देता है, वो अदर मैटर पैराग्राफ में होता है. सपोज मैं एग्जाम्पल पहले बोला हूँ, एक ब्रांच है मेरा, वो मतलब इतना मटेरियल नहीं है, हम ऑडिट बिना करके छोड़ दिया है, इतना मटेरियल नहीं है. As a consolidated financial level, the branch is not material. There are suppose 20,000 assets in the branch. That is a small branch which we have just 20,000 assets. But our company has 20 crores business, 20 crores asset in total, which is immaterial 20,000 assets. We started, we thought that it is immaterial and we haven't audited. But later on, if any major some misstatement has come from there, no one should show that you have not audited properly, so that we will clearly mention that as in our opinion the branch is of no material value, in our opinion the branch is immaterial, so we have not audited the financial statements of that particular financial records of that particular branch. We will mention that and we will issue in other matter paragraph. So what is other matter paragraph? So that auditor report will be betterly understood by the users of FS. If an auditor have formed an opinion on the FS, consider it is necessary to communicate matters other than those presented and disclosed in financial statements. Auditor has considered it necessary to communicate in the matters other than those presented. You have to identify this, other than those presented. These matters have not presented in the FS. If these matters have been presented in the FS, he can emphasize and draw in emphasis of matter paragraph in order to better understanding of audit report. So is relevant for the users understanding of what? Understanding of not FS, understanding of audit and auditor responsibilities or the audit report. ये तीनों समझने के लिए हम एडिशनली अदर मैटर पैराग्राफ को ये इन्फॉर्मेशन देता है. एंड उसके साथ हम ये भी मेंशन करना है, ऐसे देना इन्फॉर्मेशन लॉ प्रोहिबिट नहीं करना है. अगर लॉ प्रोहिबिट किया है तो आप नहीं दे सकते. द इंफॉर्मेशन गिविंग इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द इंफॉर्मेशन यू आर डिस्क्लोजिंग इज नॉट ए की ऑडिट मैटर डिटरमाइंड बाय SS 701. In those cases you will issue other matter paragraph. Other matter paragraph will be included in the audit report with a separate section, other matter paragraph below emphasis of matter paragraph. If emphasis of matter paragraph is not there, immediately below basis of opinion. If emphasis of matter paragraph is there, immediately below emphasis of matter paragraph, you will include other matter paragraph. Okay.
circumstances in which other matter paragraph can be used. See, these are the examples. What when the matter is relevant to the users of, sorry, when it can be used, when other matter paragraph is issued, when there is a matter that is relevant to the users understanding of audit. Audit को समझने के लिए यूजर्स को एक इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, तब वो इन्फॉर्मेशन आप अदर मैटर पैराग्राफ थ्रू सबमिट करेगा. और when there is a matter that is relevant to users for understanding of auditor responsibility, auditor responsibility समझने के लिए, audit का समझने के लिए, और when report of one more than one set of financial, अभी बात किया है ना, we are reporting on more than one set of financial statements, आपका branch का financial statements भी आ रहा है. In that cases, if the branch is not mandatory, मतलब material, you will mention in your other matter paragraph. Where there is no distribution or use of audit report. Illustrations. See, these are the examples. An audit report is containing a, these are audit report का एक illustration दिया है. Qualified opinion कैसे issue करते हैं, आप एक बार देख लीजिए इसका, कोई doubt आ गया तो आप discuss कर सकते हैं. So पूरा एक illustration example situations दिया है, नीचे कैसे कैसे एक opinion formulate करता है वो example दिया है आपको, कि situation में कैसे एक example देता है. इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आप एक बार सिचुएशंस को ध्यान से देखिए, बाद में एक एक्सप्लेनेशन देके इसको क्लोज कर देते हैं. क्या क्या मतलब रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होता है, हम बात किया है ना. एक टाइटल होता है, टाइटल के बाद एक एड्रेस ही होता है टू द मेंबर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड. उसके बाद क्या होता है, रिपोर्ट ऑन स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ. व्हाट ओपिनियन यू आर इश्यूइंग, क्वालिफाइड ओपिनियन, यू हैव मेंशनड इट एज क्वालिफाइड ओपिनियन and you are issuing that qualified opinion. This what you are mentioning, we have audited the FS of ABC Limited, which complies what you have audited under ABC Limited, the financial statement. What are the financial statement? Balance sheet, profit and loss account, notes to account, cash flow statement, statement of equity. All the reference we will draw, which comprise of balance sheet as on 30th March, profit and loss account for the period, statement of cash flows for the year ended, notes to financial statements, significant accounting policies, and you will mention all the information that you have verified as a part of financials. And see, ended as on the date, branch auditors of company branches returns, in which we have included explanatory information में आप ये भी include किया है, branch auditors जो भी branch audit किया है वो appropriate report या returns हमको भेजा है, हम verify किया है. In our opinion, then we are expressing our opinion on what we have audited. In our opinion, to the best of our information and knowledge, except, see, qualified मतलब एक दो चीज छोड़ के बाकी सब ठीक लग रहा है. Exception, except effects of the matters described in basis of opinion paragraph. जो भी exceptions है हम detailed basis of opinion में disclose किया है. Except those matters, the rest of the financial statements reflect true and fair view and in conformity with accounting policies and generally accepted accounting. The बाकी सब जो है वो true and fair view reflect कर रहा है, except those the situations have been actually disclosed here. Audit report containing qualified opinion. So what is there? हाँ, ये situation दिया है आपको. Qualified opinion due to material misstatement. क्या क्या material misstatements है इसमें? Audit of complete list of financial statements registered under using fair presentation framework in accordance with. See, एक example दिया है. Inventories are misstated. The misstatement is deemed to be material but not pervasive. The example देखिए, deemed to be material but not pervasive. The inventory is, the misstatement of inventory is related to particular assertion, not all the assertions. So the financial statements issuing qualified opinion is appropriate. The same will be mentioned here. So the company's inventories carried on the balance sheet date is this much. Management has not stated the inventory set. एक पॉलिसी, वैल्यूएशन पॉलिसी जो है वो गलत किया है मैनेजमेंट. एक्चुअली एज पर इंडिया AS टू लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के इन्वेंट्री को
वैल्यू करना है, बट द व्हाट द मैनेजमेंट हैज देम सोलोली एट कॉस्ट. दिट इज द वायलेशन ऑफ वैल्यूएशन प्रिंसिपल. इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन प्रिंसिपल होता है वो वायलेट करके मैनेजमेंट ने स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किया है. इसकी वजह से हम ये असर्शन जो है वो वायलेट हुआ है. इसके लिए हम बोल रहे हैं कि departure from accounting standards mentioned under 133, which is leads to material misstatements. If they have been valued at that particular valuation rule, there might be increase by this much, profit might be increased by this much, income tax might be increased by this much. We will mention all the qualification what we are intention to issue. You will mention all the details, and we have conducted our audit. The next paragraph is relating to normal opinion. We have conducted our audit in accordance with standards on auditing. Our responsibilities are relating to audit of FS of our audit report. We have performed our audit with code of ethics. How you have performed? We are independent ethical requirements that are related to audit of financial statement under the provisions of we have fulfilled our ethical responsibilities. We believe that audit evidence we have obtained. This is important. We believe that we have to mention that we believe that the audit evidence is sufficient and appropriate to be provide basis for our qualified opinion. Whatever our opinion you will change here for our opinion normally. नहीं तो qualified opinion, disclaimer of opinion, adverse opinion you will mention. In case of disclaimer of opinion, we have obtained evidence. You cannot tell sufficient and appropriate because in case of disclaimer of opinion, you haven't obtained sufficient and appropriate audit evidence to conclude that audit. Since you are not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence, you are issuing disclaimer of opinion. In that case only, you cannot write this line. You cannot write this. We are unable to conclude the FS, true and fair view of the FS. So that is why we are issuing disclaimer of opinion. Key audit matters. There are some key audit matters mentioned in the top. See, let us see what are the key audit matters. Some examples he asked to write some key audit matters communicated as the FS. Is there any communications given based on the audit evidence? The auditor concluded that no. Ethical requirement they have complied. Okay. Nothing has been mentioned. It is our own. What are key audit matters? He has not mentioned any special key audit matter. He has mentioned the definition of what are key audit matters. What are key audit matters? Key audit matters are those matters that in our professional judgment, मतलब ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट में वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन audit of financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of audit. Financial statements are there in the forming our opinion thereon, and we do not observe any separate opinion. We will mention that disclosing key audit matter does not change our opinion. We are just disclosing for based on thinking that they are significant for your understanding. So that we are disclosing. Described below are key audit matters. Describe the key audit. ऐसा mention करके आप key audit matters mention करना है audit report में. Then you will disclose reporting responsibilities of management. What are the responsibilities of management? Financials prepare करना, internal controls maintain करना, assets को safeguard करना, जो भी responsibilities, information देना auditor को audit करने के लिए, sufficient access, people को employees को inquire करने का right देना, access देना, वो सारा details इधर आता है. Then auditor responsibilities. What are the responsibilities of auditor? He need to conduct audit in accordance with SAS. He not obtain sufficient and appropriate audit evidence. He not to excess professional judgment, professional skepticism. He has to determine appropriate materiality. He has to understand the business and perform audit. Sufficient documentation he has to maintain. He has to comply with legal and ethical requirements. All these points he will mention. He has to conclude and issue an opinion. That is also his duty. All these obligations you need to disclose here. Other matter paragraph. What is the other matter paragraph? There is an example given here. What you can disclose. Other matter paragraph मतलब आपका audit report समझने के लिए देता है. Here there is a we did not audit financial statements of number of branches. Suppose 2 branches included in the standalone financial statement. Whose financial statement or financial statement effect of total assets is this much. Suppose 20,000. Total revenue is 30,000 for the year ended. As considered as in the standard, the financial statements of these branches have been audited by the branch auditors whose, so you can mention not audited or we didn't audit, some branch auditors have audited that financial statements, so the whose reports have been furnished to us in our opinion, the accounts and disclosure number based the solo law report on the
So we have used the report of branch auditor. We are clearly mentioning that we have not audited, we have used the report of branch auditors. We are clearly mentioning that in our audit report, so that those who are using our audit report will understand that the branches have been not audited by ABC and Co. It is audited by XYZ and Co. So that they will have better understanding. So these are legal reporting responsibilities. You will get CARO here. If the CARO is applicable based on the limit. CARO applicability क्या है? CARO applicability क्या है? सारे का applicable होता है 1 crore, 1 crore, 10 crores. If your amounts turnover is 10 crores, paid up share capital or borrowings is 1 crore, 1 crore. If it is more than any of the conditions, then CARO will be applicable. This is the 7.5. We will go to 7.6. So if you want, you can see whole topic once again. We will continue. Any doubts regarding the topic? दोनों ग्रुप क्लियर करने के पहले करना है आईटीआई ट्रेनिंग. ओके ओके. विल कंप्लीट दिस इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम कंप्लीट कर देते हैं. इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट अपकमिंग NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. इट इज द स्मॉल टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस होल चैप्टर एक्चुअली, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस 7.7. We will disclose those and we will end today's session. The concept of internal financial control. The concept has been already disclosed. What are IFCs while disclosing internal controls, while disclosing what are audit risk and all topics of that. We have disclosed internal controls, internal financial controls and internal financial controls over financial reporting. The basic given, the topic given here is हाउ द ऑडिटर विल रिपोर्ट. ये आपको समझने के लिए ये इधर भी दिया है एक्चुअली. इसमें सारा ऑडिटर रिपोर्ट कैसे देता है, वो रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको समझाने के लिए फिर से ये टॉपिक इधर रिपोर्ट किया गया है. ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है. व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होता है. द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स adopted by the management for ensuring orderly and efficient conduct of its business, for adherence to company business policies and practices, safeguarding of assets, prevention and detection of frauds and errors, the accuracy of accounting records, the timely preparation of accounting records. ये चीज़ orderly and efficient conduct of business, सही से business करने के लिए compliance, adherence to company's objectives and policies, and safeguarding of assets, detection of frauds and errors. ये सारा चीज़ और कंट्रोल, एक कंट्रोल करने के लिए आपको एक पॉलिसीज जो बनाता है वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स. देन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या मतलब, ऑडिटर क्या किस सेक्शन के अंदर इसका ऑब्लिगेशन है रिपोर्ट देने के लिए. 143(3)(I ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स. अंडर 143(3)(I ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट whether the company has adequate internal financial controls in place and operating effectiveness. He will check and he will report whether there are internal financial control systems in place and about its operating effectiveness. And also as per
company's rules also, the board need to report. In the board report, the board need to report whether the details in respect of adequacy of internal financial controls. In the board report, they have to mention with regard to financial statement. The board also in their board report need to mention. These are the two reporting responsibilities with respect to auditor. He will check whether the board has reported in their board report or not. That is also, he will check the compliance of the board, whether the board is complying. Next, the auditor, whether he will also in his own report of audit report, he will comply 143(3)(1)(I). Sorry. Then what is इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? अभी जो डेफिनेशन डिस्कस किया वो फाइनेंशियल कंट्रोल्स है. ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्पेसिफिकली रिपोर्टेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, financial statements. So what is the definition of that? In the earlier we have mentioned that auditor will report on the in the earlier reporting responsibilities we have discussed 143(3)(I). Auditor report on internal financial controls systems in place or not, their adequate effectiveness. But exactly if the auditor should see, he will report on internal financial controls relating to over financial reporting. Rule 10A for the एक्चुअली इसका अप्लीकेबिलिटी कब आया है? जब 2014 में कंपनीज का नया रूल्स आया है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स. इसमें ये ऑडिटर को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है हाउ टू कंप्लाई. इसमें क्या हुआ है, उन लोग अप्लीकेबिलिटी बोला है 2015 अप्रैल से, बट वॉलेंटरली द रूल्स हैव बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2000. वॉलेंटरली इफ यू वांट टू कंप्लाई, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये नया स्टैंडर्ड आया है. अगर हम इस साल को वॉलेंट्री दिया है, अगले साल से कंपलसरी किया है. इसी साल से हम कंपलसरी मान के स्टार्ट किया है, हम वॉलेंटरली उसको कंप्लाई किया है. हम ये वॉलेंट्री कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं 2014 से, वो मेंशन किया है. कब से ये ओवर रिपोर्टिंग ऑडिटर करना स्टार्ट किया है? 2015 मैंडेटरी, 2014 वॉलेंट्री है. एक साल वॉलेंट्री दिया है, 2015 से एक्चुअली मैंडेटरी किया है. और नेक्स्ट, सो व्हाट इज द गाइडेंस नोट ऑन दिस? हाउ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया गाइडेंस नोट मतलब हाउ टू डू दैट. आई टोल्ड यू टू डू टू रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स. हाउ ऑडिटर विल डू, कैसे करता है, ये एक गाइडेंस चाहिए ना, जो इंस्टीट्यूट्स है वो इश्यू करते हैं. आप ऐसे ऐसे करने से आपका जो लायबिलिटी होता है वो कम हो जाता है. इसका गाइडेंस नोट क्या गया, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है गाइडेंस नोट के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का? वेदर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सो गाइडेंस नोट में क्या मेंशन किया है? एज पर 143(3)(I) जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर एडिक्वेट द एडिक्वेसी ऑफ द कंट्रोल्स एंड इट्स इफेक्टिवनेस, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, जिसमें रिपोर्टिंग है वो एग्जैक्टली ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो रिलेटेड कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसमें ऑडिटर रिपोर्ट करेगा. ये गाइडेंस नोट में दिया है. ग्लोबली क्या कर रहा है हमारा गाइडेंस नोट? ओवर फाइनेंशियल ग्लोबली भी वही कर रहा है. ग्लोबली ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल कंट्रोल्स इज टुगेदर विथ रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इंटरनल कंट्रोल्स में जो रिपोर्ट कर रहा है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट रिपोर्ट देता है ना, उसके साथ ही देता है. सो ग्लोबली जो है वही हम कॉम्प्लाई कर रहे हैं. इंटरनल कंट्रोल्स रिपोर्टेड ऑन रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल कंट्रोल, जो ग्लोबली भी फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही दे रहा है. स्टैंडर्ड भी हमारा इंस्टीट्यूट गाइडेंस नोट भी वही बोल रहा है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. और नेक्स्ट, अभी क्या करना है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये फाइनलाइज हुआ है गाइडेंस नोट पढ़ने के बाद. अब क्या क्या पॉइंट्स देना है, मतलब रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स देना है. व्हाट इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये डेफिनेशन देखिए. ए प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? हम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एक्सटर्नल यूजर्स जो सप्लायर्स है, एम्प्लॉयज है, बैंक्स है, इन्वेस्टर्स है, वो सारा यूज करेगा. जो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन प्रोसेस है और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो सारा एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट दे आर रीजनेबल, दे हैव बीन प्रिपेयर्ड विद इंटीग्रिटी, रिलायबल. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल्स है
they are functioning effectively, and when they are functioning effectively, it automatically enhance the reliability. reliability मतलब reliability मतलब क्या होता है? reliability मतलब क्या होता है? reliability, your confidence, trustworthiness. so ये उसके ऊपर आपका इंक्रीज हो जाता है जब कंट्रोल्स अच्छा है तब. so what you will report, so you will check these 3 points, you will report on this pertaining to the maintenance of records. The records, you will check the reasonableness, the policies and procedures about maintenance of records. Reasonable details have been mentioned, accurately mentioned, fairly reflect the transactions and disposition of assets. All the things have been fairly mentioned. You will check the policies and procedures relating to maintenance of records, how the company is maintaining the records, how reasonable details, how they are mentioning the details of the transaction accurately and fairly, the details of the transaction accurately, how much accurately, and disposition of assets. disposition मतलब sale of assets, how much मतलब safeguards, controls कैसे, when एक asset बाहर जा रहा है कितना कंट्रोल के साथ. हम जो एम्प्लॉय है अगर इसको लैपटॉप को उठा के लेके जा रहा है तो कोई कंट्रोल नहीं है. so it is lost to the company if I take it my personally without any generating sale or something amount to it. so that is why what are the controls the company is being maintained over the financial assets. then next point क्या है? reasonable assurance about the transactions recorded to permit whether the transactions recorded in the preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles. जो भी transaction record होगा वो accounting के standard के साथ record होगा, generally accepted accounting principle के साथ record होगा, in accordance with internal authorization from the. एक transaction अगर एक चेंज में 100 रुपीज एंट्री करना है बुक्स में, उसके ऊपर का अप्रूवल होना चाहिए पहले, तभी मैं एंट्री कर सकता हूँ. अगर आप मैनेजर है, आप चीफ मैनेजर मान लो, आपके पास 100 रुपीज का ऑथराइजेशन, आपके पास 1000 रुपीज का ऑथराइजेशन है, मैं एक अकाउंटिंग एंट्री कर रहा हूँ. जब पहले अगर 100 रुपीज का एंट्री है तो आपका ऑथराइजेशन होना चाहिए, 1000 रुपीज का एंट्री है तो आपका ऑथराइजेशन होना चाहिए उसके ऊपर. ऐसे एक कंट्रोल्स बना हुआ है या नहीं, उसको कॉम्प्लायंस भी चेक करना है. existence, adequacy of control, whether there are adequate controls, and next whether they are operating effectively. दो चीज आप चेक करके then you have to report. then provide reasonable assurance about timely detection of frauds and errors. अभी तीसरा पॉइंट क्या है? अभी रिकॉर्डिंग जो है ठीक से चल रहा है, अगर कोई फ्रॉड कुछ हुआ है उसको भी टाइमली डिटेक्ट करना है, उसके लिए भी कंट्रोल्स लगा हुआ है नहीं. अनऑथराइज्ड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स अभी बोला है, मैं इसको उठा के अनऑथराइज्ड, नहीं तो मैं इसको घर लेके जाके 10 दिन यूज करके फिर वापस इधर ही लेके आया हूँ. दैट इज ऑल्सो अनऑथराइज्ड एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर 10 days. सो ऐसे कुछ हो रहा है क्या? डिस्पोजिशन ऑफ कंपनी एसेट दैट कुड हैव मटेरियल इफेक्ट. अभी ये छोटा अमाउंट है, अगर ये 3 लैपटॉप हम लेके गए तो बड़ा लॉस टू द कंपनी. ऐसा कुछ मटेरियल इफेक्ट ऑन द कंपनी, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? रीजनेबल एश्योरेंस, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. ऐसा रीजनेबल एश्योरेंस ऐसे कुछ नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल्स लगा हुआ है. बाहर सीसी कैमरा है, बाद में सिक्योरिटी गार्ड है, फिजिकल सिक्योरिटी है, ई सिक्योरिटी है, कैमरास, वो सब इसकी वजह से हम एश्योर कर सकते हैं. देन द ऑडिटर नीड टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ. सो ये पॉइंट्स चेक करना है. he has to audit and he has to obtain appropriate reasonable assurance on the, he has to test the control effectiveness, functioning of the control, operative effectiveness, he has to design effectiveness. पहले अगर हम लेके जा रहे हैं तो खाम सीसीटीवी काम कर रहा है या नहीं, वो बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सो रहा है या नहीं, वो चेक करना है पहले. दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग डिजाइन इफेक्टिवनेस, वो अच्छे से डिजाइन किया है या नहीं. देन ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस, ये दोनों चेक करना पड़ेगा. Then the guidance note also provides for adequacy and operative effectiveness. So provides that reporting on adequacy of even in case of consolidated financial. So guidance note ये भी दिया है, in case of consolidated financial statements ये कैसे report करना है. However, reporting on IFC will not applicable. Interim financial statements में audit report नहीं देता है, सिर्फ एक सर्टिफिकेशन देता है. So in that cases it is not. इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों करते हैं? कुछ इंटरिम डिसीजंस के लिए करता है. पहले हम पढ़ा है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट क्यों करता है? कुछ इंपॉर्टेंट बैंक लोन चाहिए इसकी वजह से करता है.
उसमें कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं देता है, सिर्फ फिनेंशियल्स को साइन करता है। ये तो हमको ठीक लग रहा है ऑडिटर ने, इसमें कोई मतलब बड़ा मटेरियल स्टेटमेंट हमको दिखाया नहीं, इसके लिए ये पॉइंट्स अप्लीकेबल नहीं होता है, ये बोलना चाहता है। ओके, दिस इज व्हाट IFC, once you read the points what the auditor need to report on, so that you will not have any defaults in future. What the auditor need to report on IFC or financial reporting as per the guidance note of Institute of Chartered Accountants of India. कैसे कुछ प्रिपरेशन चल रहा है क्या? एग्जाम्स तो स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहे हैं? सितंबर, दिसंबर 11, और डेली होता है ना? प्रिपरेशन हो गया? ग्रुप 1 का कैसे चल रहा है? हो गया? नहीं, आप करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं पूरा दिन? नहीं, अभी टाइम इन्वेस्ट नहीं है, बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाता है, प्रेशर बिल्ड हो जाता है, आपको एक ही ग्रुप डिसाइड करना पड़ता है, वो सारा चीज़ आ जाता है। पहले से डिसाइड करके रखिए, अगर दोनों लिखना है तो पहले से प्लान करना पड़ेगा आपको, उसी हिसाब से टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। सच में बोल रहा हूँ, आपका भी सुबह डिग्री का क्लासेस चल रहा है, आफ्टरनून में ये प्रेशर बिल्ड होने से, लेट तक डालने से, सिलेबस ज़्यादा टाइम कम रखने से प्रेशर बिल्ड हो जाता है आपके ऊपर। सो पहले से थोड़ा थोड़ा ख़त्म करने से आपको थोड़ा आसान हो जाता है लास्ट में। जितना आप अभी से थोड़ा प्रेशर लेके चलता है, लास्ट में आपका प्रेशर उतना कम हो जाता है। एक बात ये है कि टाइम वेस्ट करने से टाइम वापस नहीं आता है, वो सच है। फिर ये भी सच है कि बार बार यही बुक देखना भी बुरा लगता है आपको। अभी नया है इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट होता है, बार बार यही बुक देखने में बहुत बुरा लगता है आपको। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बार बार यही बुक नहीं देखना है। सो इसलिए थोड़ा अभी टाइम निकाल के कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है? NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक्चुअली कंपनीज एक्ट का जो अथॉरिटी होता है, कोई भी कुछ करना है ICAI के पहले कंपनीज एक्ट के सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी होता है। सो कंपनीज के लिए एक जो अथॉरिटी बना हुआ है पहले, नाकास, नेशनल अकाउंटिंग एंड नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसको जब 2013 का कंपनीज एक्ट आया है उसमें नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नाम से चेंज किया है, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। बट 2013 से वो इफेक्टिव नहीं है, वो इफेक्टिव आया है कि अक्टूबर 2018 से वो एस्टेब्लिश किया है एक्चुअली NFRA का। 2013 में कंपनीज एक्ट आया है, उसमें मेंशन किया है एक ऐसा एक आएगा NFRA नाम से, बट वो एस्टेब्लिश कंस्टिट्यूट किया है अक्टूबर 2018 में। सो क्या कमिटीज उसके पार्ट होता है NFRA में? एक जो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, एनफोर्समेंट कमेटी। दो स्टैंडर्ड्स होता है, अकाउंटिंग कॉम्प्लायंस, ऑडिटिंग कॉम्प्लायंस देखना, और एनफोर्समेंट इसका कॉम्प्लायंस देखना, स्टैंडर्ड्स का इश्यू करना, उसका कोई गाइडेंस कुछ वगैरह चाहिए तो वो इश्यू करना, और नीचे उसको कॉम्प्लायंस देखना, आप कंप्लाई हो रहा है नहीं, एज एन ऑडिटर आप कंप्लाई हो रहा है नहीं, इसको एनफोर्समेंट देखना, वो एनफोर्समेंट कमेटी का काम होता है। और क्या क्या फंक्शन होता है NFRA का, आप ही सोचिए NFRA का क्या फंक्शन होता है। अभी बात किया है ऑडिट कमेटी, अकाउंट्स कमेटी, उसका स्टैंडर्ड्स इश्यू करना, कॉम्प्लायंस देखना। सो क्या होता है, रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स टू बी अडॉप्टेड बाय कौन? सिर्फ कंपनीज का है, ये आपको याद में रखना है। जो NFRA जो भी करता है वो कंपनीज के लिए करता है, अडॉप्टेड बाय कंपनीज फॉर अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करके किसको किसके लिए करता है,
वो स्टैंडर्ड्स वगैरह इश्यू करके वंस इट इज अप्रूव्ड इट comes with legal effect to be complied by companies accounting policies and standards recommend कर देता है NFRA एंड नेक्स्ट क्या करते हैं मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कॉम्प्लायंस विद अकाउंटिंग जो पहले स्टैंडर्ड को रिकमेंड किया है सपोज इंडिया एस टू इन्वेंट्री स्टैंडर्ड को कैसे फॉलो मतलब एक स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करके दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव किया है नाउ इट इज लीगल इफेक्ट इट केम विथ एज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133 वेयर द कंपनीज हैव टू कंप्लाई विद सेक्शन 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाउ अगर कोई 130 सॉरी इंडिया एस टू को कंप्लाई नहीं कर रहा है तब एनएफआरए के पास पावर होता है कि पहले चेक करके तब एक्शन ले सकता है कंपनी के अगेंस्ट कुछ फाइन्स डाल सकता है नॉन कॉम्प्लायंस का फाइन होता है ना वो डाल सकता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनएफआरए सो नेक्स्ट क्या करते हैं ओवरसी द अभी अकाउंटिंग हो गया ऑडिटिंग हम ऑडिट कर रहे हैं अगर डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं मेंटेन कर रहा है अगर कोई स्टैंडर्ड्स जो है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वो कंप्लाई नहीं कर रहा है क्वालिटी इंश्योर नहीं कर रहा है जो भी हम मान रहे हैं फाइनेंशियल आ रहा है साइन करके दे रहा है ये सब ठीक है जो क्वालिटी इंश्योर करने के लिए जब उन लोग आता है ना ऑडिट के लिए एनएफआरए से या इंस्पेक्टर को भेज देते हैं आपका ऑडिट फॉर्म का डॉक्यूमेंट चेक करना है हाउ कैसे ऑडिट कर रहा है हाउ वी वांट टू सी द क्वालिटी ऑफ योर ऑडिट देन दे विल check the whether you are maintaining proper documentation, whether you are deciding your decisions have been properly documented, your procedures have been documented or not as per standards, as per requirements, whether the policies or procedures performed, audit policies and audit techniques performed, whether the auditing methods performed, whether those has been in accordance with those mentioned in the standard or not, whether you have been deviated anything reported in the standard, whether you have clearly mentioned the deviation, the reason for deviation or not. They all will check, they will see the quality of service. Perform such other functions incidental to the aforesaid functions. कोई एडिशनल फंक्शन कुछ भी हो सकता है विच इज इंसिडेंटल मतलब ये करने के लिए अगर कुछ काम करना है कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है कुछ और ड्यूटी करना है वो भी ये कर सकता है इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ एनएफआरए क्या क्या होता है रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस आप अभी याद रखिए ताकि कभी कभी याद आता है ऐसे रखने से क्या होता है recommendation of accounting policies and procedures to be followed by to be adopted by the companies for the approval of central government approve करने के बाद companies needs to adopt and comply then enforce compliance of the accounting standards by the companies then ensure quality of service of the professional associated with ensuring compliance with such standards of auditing and suggest methods for improvement कोई जो प्रोफेशनल्स है वो प्रैक्टिकल का सिचुएशन देखता है क्या इश्यूज आ रहा है प्रैक्टिकलिटी में जब ऊपर से इश्यू करेगा उसको थोड़ा अमेंडमेंट्स का मतलब जब इश्यू करेगा वो कुछ और सोच के इश्यू करेगा बट जब मार्केट में आएगा कंप्लेंट स्टार्ट होगा डिफरेंट कंपनीज को डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस होगा उस हिसाब से ऊपर का जो लोग है वो अमेंडमेंट करना पड़ता है एक्ट को अभी मान लो सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ पहले गवर्नमेंट सोचा है हमको रेवेन्यू का जरूरी है इसकी वजह से मिल्क में जीएसटी रेट 5% रखा है बट इसकी वजह से एक नॉर्मल पर्सन जो है एक लो क्लास मतलब पुअर पर्सन जो है वो मिल्क का रेट 5% करने से 100 का मिल्क प्राइस जो हो रहा है 105 हो रहा है दे आर अनेबल टू अफोर्ड अभी मार्केट में अभी जीएसटी काउंसिल को जो ये पता चला कि इसकी वजह से the milk is being has become unaffordable by poor people so it again will decrease the price of GST on milk it will give you nil rate so these are the practical feasibilities again they will ensure after checking whether to check or not पहले एक होता है उसके बाद amendments आता है उसके साथ क्यों होता है practical feasibility कुछ issues होगा उसको correct करने के लिए उसको जो भी है उसको easily compliance देना एक कठिन टास्क है आपको कुछ दिक्कत होता है मुझे कुछ दिक्कत और कुछ और दिक्कत होता है वो सारे के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है इसकी वजह से बहुत रिविजन आता है एक एक्ट आने के बाद एक आने के बाद आप कोई लूप होल्स ढूंढता है आप कोई
जब हमको पता चलेगा ये लूप होल है एक्ट में, जब हम उसको क्लोज करके एक अमेंडमेंट इश्यू करेगा, वैसे अल्टीमेट अमेंडमेंट के साथ एक एक्ट आता है। सो ये सारा पॉइंट्स है। ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड सजेस्ट मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट। सो जो भी स्टैंडर्ड है उसमें एक लूप होल है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सपोज मान लो इन्वेंट्री जो है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो हायर वैल्यू, पहले ये रखा है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर, इसमें वैल्यू करना है। ओके जब उन लोग क्या कर रहे हैं, एनआरवी ज़्यादा दिखा के वैल्यूशन में ज़्यादा ले रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से इट इज़ द रिपोर्टिंग इज बिकमिंग इनअप्रोप्रिएट। देन द जो देखा है प्रोफेशनल्स जो देखा है उसका एग्जैक्ट जो है वो गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, जिसकी वजह से देन दे हैव चेंज टू इट इज एन एग्जांपल, देन द इंस्टीट्यूट विल थिंक व्हाट शुड बी डन, देन इट हैज reduced to cost or NRV whichever is lower. It is just an example, it has not happened actually. I am just happening what will be the practical, what is meant by suggesting measures of improvement. ऐसा कुछ हो सकता है। Then NFRA का क्या मेन है, प्रोवाइड्स अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। अभी इतना कुछ जो कर रहा है NFRA क्यों कर रहे हैं, जो कंपनीज में बहुत सारा पीपल इन्वेस्ट करता है, प्राइवेट कंपनीज छोड़ दीजिए, पब्लिक कंपनीज में बहुत सारा पीपल का मनी इन्वॉल्व होता है, बैंक से लोन इन्वॉल्व होता है, वो भी पब्लिक मनी ही है। सो क्रेडिटर्स का मनी इन्वॉल्व होता है, जो किसी और ने गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट में दिया होगा उसका मनी भी इन्वॉल्व हुआ है। सो इन सारा चीज़ अगर कोई एक कंपनी में इन्वॉल्व हुआ है, वो उसमें बड़ा गलती होने से सबके लिए प्रॉब्लम होता है और सबके लिए नुकसान होता है। इसकी वजह से इतना हाई स्टैंडर्ड्स, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। effective oversight of accounting performed by companies and body corporates and also auditing functions by auditors। जो भी ऑडिट कर रहा है उसको भी देखना जरूरी है। अगर ऑडिटर को नहीं देखा है तो फ्रॉड्स जो भी कंपनीज में हो रहा है वो बाहर नहीं आता है। अगर आप जाके ऑडिट कर रहे हैं, आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी इश्योर नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, फ्रॉड्स डिटेक्ट कैसे होगा? आप इतना मतलब ध्यान से चेक नहीं किया है तो इसके लिए क्वालिटी इश्योर करने के लिए ये सब कंट्रोल जरूरी है। सो NFRA अभी क्या काम करता है वो देखा है, कैसे काम करता है वो। NFRA का रोल, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का रोल इन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में कैसे काम करता है। सो अभी हमारा सब्जेक्ट ऑडिटिंग है, इसलिए इसको डिटेलली ऑडिटिंग के रिलेटेड डिस्क्लोज किया है। सो क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पहले रिकमेंड करता है। सो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिकमेंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले इनपुट्स कुछ देना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करने के लिए इनपुट्स कुछ लेना पड़ेगा। इनपुट्स जो देने वाला कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो एक ही बॉडी है वो ऑडिट में मतलब उसका ये होता है, वो पहले स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट किया है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, उससे इनपुट लेगा। ये कैसे करने से कंपनीज को अच्छा होगा, पब्लिक को अच्छा होगा, इसके लिए इनपुट्स लेके उन लोग एक स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करते हैं। एंड इन केस ऑफ एनी अमेंडमेंट्स आल्सो दे विल टेक इनपुट्स। ऐसे इश्यू एक प्रॉब्लम फेस हो रहा है, इसका कैसे अमेंड करने से ये पूरा अच्छा रहेगा। देन सीक एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ, इन केस ऑफ एनी अदर, वो कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास बना हुआ है, उसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन एडिशनली चाहिए, कुछ और एक्सप्लेनेशन एडिशनली चाहिए, इट कैन टेक फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया टू फॉर्मुलेट द स्टैंडर्ड्स। एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करने के लिए इश्यू कर दीजिए इसको। फर्दर द अथॉरिटी शैल कंसीडर द रिकमेंडेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन देन बिफोर मेकिंग द रिकमेंडेशंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एक स्टैंडर्ड एक इश्यू में सपोज इन्वेंट्री का, सॉरी इन्वेंट्री नहीं, एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिटिंग में लेना है, कैसे लेना है। एक अभी कंपनीज के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे करने से वो अच्छे से ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाता है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट NFRA इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए रिकमेंडेशन पूछा है। जब उन लोग दिया है एक लेटर बेस्ड, एक लेटर में ऐसे एक फॉर्मेट होता है, हम इसको जो भी क्रेडिट और डेटर है उसको भेज के उससे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेता है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में भी 2-3 टाइप्स है, नेगेटिव कन्फर्मेशन, पॉजिटिव कन्फर्मेशन। नेगेटिव कन्फर्मेशन में हम ब्लैंक छोड़ के भेज देते हैं। पॉजिटिव कन्फर्मेशन में क्या करते हैं, हम अमाउंट लिख के भेज देते हैं, इतना अमाउंट है, आप बोलिए
चेक करके बताइए, अगर एरर है तो उसके साथ आपका रिस्पॉन्स भी दे दीजिए, आपका अमाउंट आपका रिकॉर्ड्स में कितना है। अगर उन लोग को ब्लैंक छोड़ के भेज देते हैं, जब आके हमारे पास आने के बाद हम चेक करते हैं इतना बैलेंस होना चाहिए, इसका इतना बैलेंस हमारा बुक्स में है, क्यों डिफरेंस है, उसको रिकंसिलेशन करना करते हैं, वो होता है। सो ये सारा प्रोसेस ओके, इसे रिकंसिलेशन करके ऑडिटर को देना है, मैनेजमेंट रिकंसिलेशन किया है या नहीं किया, ऑडिटर चेक करेगा, रिकंसिलेशन आइटम चेक करेगा क्यों डिफरेंस है। ओके, उन्होंने एक इनवॉइस भेजा है, वो आफ्टर द कट ऑफ डेट भेजा है, मतलब हम ऑडिट कर रहे हैं एज ऑन 31 मार्च, उसका इनवॉइस वो अकाउंट कर सकते हैं 30 मार्च, बट जब गुड्स ट्रैवल में है वो हमारे पास आने में 1 अप्रैल हो गया, नहीं तो 2 अप्रैल हो गया। 31 मार्च हमारे पास नया नो इनवॉइस है, नो गुड्स है, बट उसके पास वो तो भेज दिया है, रिस्क एंड रिवर्स ट्रांसफर कर दिया है उधर से इनवॉइस करके, जो गुड्स हैव बीन इन ट्रांसपोर्टेशन। अभी क्या करेगा वो, एटलीस्ट गुड्स एंड ट्रांजिट वो हम चेक करेगा, हमारे पास इनवॉइस नहीं आया इसलिए ये लाइबिलिटी हमारे पास आया नहीं है बुक्स में। जब इनवॉइस आएगा हम इसको लाइबिलिटी बुक करेंगे, वो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम देगा। सो इसमें दो चीजें है, रिकमेंड करना, रिकमेंडेशन एक चीज के अगेंस्ट रिकमेंडेशन लेगा, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देगा, क्या स्टैंडर्ड इश्यू करना है उसके बारे में। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कैसे मॉनिटर करेगा, सी फॉर कंपनीज एक्ट अंडर द सी मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अंडर द एक्ट बाय द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, इट विल रिव्यू द वर्किंग पेपर्स ऑफ एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड टू ऑडिट। सो पहले क्या चेक कर सकते हैं, ऑडिटर का वर्किंग पेपर्स, वो स्टैंडर्ड से कंप्लाई किया या नहीं किया है, वो ये चेक कर सकते हैं। ऑडिट का ऑडिटर का वर्किंग पेपर चेक करेगा, बिकॉज ही विल रिकॉर्ड व्हाट आर द प्रोसीजर्स ही हैज परफॉर्म्ड, व्हाट आर द एविडेंस ही हैज ऑब्टेन्ड, व्हाट आर द कंक्लूजन्स ही हैज रिसीव्ड, व्हाट आर द स्पेशल डिस्कशन पॉइंट्स ही हैज मेड ऑन दिस, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ही हैज मेड ऑन दैट, all the things he will record. So first he will review the working papers, then he will check whether he has obtained sufficient and appropriate audit evidence, sufficient quality control system, जो काम का क्वालिटी है। अभी मैं एक बोला हूँ, जो बड़ा फॉर्म्स जो होता है वो कैसे काम करते हैं, पहले एक टीम होता है, ऑडिट करने के बाद एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर इंटरनल टू द फॉर्म, वो आके क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है, जो काम किया है उसी ऑडिट से कोई रिलेवेंस नहीं है, जो काम हम किया है वो चेक करेगा, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से किया है या नहीं किया है, ताकि वो कंट्रोल इंश्योर करेगा। अगर कुछ में मतलब ये जो ट्रेड रिसीवेबल का ऑब्जर्वेशन आपने नोट किया है, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं किया है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, आप फिर से चेक कीजिए। देन यू हैव टू इंश्योर, यू हैव टू रीचेक द अकाउंट्स रिसीवेबल एंड यू हैव टू इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ योर ऑडिट वर्क इज मेंटेन्ड, दैट वेदर द प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम हैज बीन इन द फर्म और नॉट। आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका XYZ ऑडिट फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश किया है या नहीं, क्वालिटी चेक करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट। देन परफॉर्म सच अदर टेस्टिंग ऑफ ऑडिट एंड सुपरवाइजरी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एज मे बी कंसिडर्ड। समटाइम्स क्वालिटी चेक्स इंटरनली आप कंडक्ट कर रहे हैं नहीं, ये NFRA करेगा। अगर कोई जरूरी है वो चेक करने के बाद इंटरनल कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है, वर्किंग पेपर्स भी चेक किया है, वो अच्छे भी ऐसे मेंटेन किया है, उसके बाद भी कुछ चेक करना है तो ये क्वालिटी कुछ ऑडिट करेगा, टेस्ट ऑडिट, मतलब पूरा ऑडिट नहीं, कुछ टेस्ट ऑडिट करके क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर ऐसे फंक्शन कर रहा है नहीं चेक करेगा, वो इंश्योर करेगा। वो एक एनफोर्सिंग कॉम्प्लायंस। और एक क्या है, द अथॉरिटी में रिक्वायर द ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन, ऑडिटर को क्या बोलेगा, आप टाइमली बेसिस एक टाइम फिक्स करेगा, 2 years 6 years नहीं तो 3 years, आप एक रिपोर्ट दे दीजिए, आप कैसे कंप्लाई कर रहे हैं, आपको पॉलिसीज कैसे है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज कैसे है, हम ऐसे ऐसे क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ऐसे ऐसे पॉलिसीज हमारा ऑर्गेनाइजेशन में ड्राफ्ट किया है, हम ऐसे ऐसे टाइमली बेसिस में 6 months या 2 months ऑडिट होने के बाद एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर को बुला के उसको इंडिपेंडेंट रिव्यू कर रहा है, हाउ टू प्रोटेक्ट क्वालिटी एंड रेपुटेशन टू रिड्यूस रिस्क इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फेल्यूर ऑफ ऑडिटर। सो ये पॉइंट आप ध्यान से पढ़िए। द ऑडिटर में रिक्वायर एन ऑडिटर, authority may require an auditor to report on its governance practices, how it is managing internal processes designed to promote audit quality, how it is
designed its internal process to promote quality, protect its reputation, and reduce the risk, including risk of failure of an auditor, and may take such appropriate action against the report if it felt that there is some non-compliance, there are improper quality control policies in your organization, then NFRA can take action against you, or it can make recommendations for improvement. You are maintaining, your maintenance of quality control policies is insufficient. You can improve like this, like this. It can give suggestions for your improvement. The authority may seek additional information from the auditor, audit firm, or personal presence of the auditor for the additional information or explanation in connection with any audit. और कुछ audit में वो चेक कर रहा है, सपोज XYZ लिमिटेड को ऑडिट का डिटेल्स चेक कर रहा है, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसमें आस्क फॉर एडिशनल प्रेजेंस, पर्सनल फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द ऑडिटर. देन the authority shall perform the monitoring and enforcement activities through officers. So how it will perform? It is an, so अभी तक जो authority हमने बोला है, वो authority जो है, it is not a physical body. So how it will enforce all this? Through its officers and enforcement authorities. Then the authority shall perform monitoring through its officers and experts with sufficient experience. वो किसके साथ करेगा? जिसके पास इसके मतलब ऑडिट में sufficient experience and expertise होगा. Audit sometimes it will publish its findings for the others to understand what are the issues, how can you maintain quality. ऐसे एक रिपोर्ट पब्लिश करने से आप पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा, ताकि हमको भी समझ में आ गया एज एन पार्टनर हाउ कैन वी इम्प्रूव क्वालिटी इन आवर फॉर्म. If the same issues present in your organization, in your partnership firm also, you can take the findings and suggestions from the reports of published by the authority and you can improve yourself. इसकी वजह से ये the authority shall publish the findings and non-compliance on its website and unless it has not मतलब कुछ findings ऐसा होता है कि अगर publish करने से नुकसान ज़्यादा होता है, फायदा तो छोड़ दीजिए, पब्लिक का फायदा छोड़ दीजिए, नुकसान ज़्यादा होता है. तब क्या होता है, अगर फ्रॉड करने का तरीका आप समझ गया, सपोज ये फाइंडिंग्स देख के आप नया तरीका समझ ले फ्रॉड कैसे कर सकता है, तब क्या होता है, नुकसान ही होता है. इसकी वजह से आपको बेनिफिट कुछ नहीं होता है. इसके लिए अगर उसको लगा है इसके पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं होगा, नॉट टू डू सो इन पब्लिक इंटरेस्ट फेल होगा, देन इट विल माइट डिसाइड नॉट टू पब्लिश. Then if there is any confidential information also for reasons recorded in writing, it cannot publish the information. May send separate. So after all the verification, the authority has to report to central government with all the information containing proprietary and confidential information to central government. When the authority finds some reason to believe that law and professional and other standard has any violated, the auditor has violated some standard प्रोफेशनल कॉम्प्लायंस, लाइक CA एक्ट के अंडर कुछ प्रोफेशनल एथिक्स को बोला जाता है. अगर कोई नॉन कॉम्प्लायंस है प्रोफेशनल एथिक्स में, अगर कंपनीज एक्ट के अंडर कुछ कॉम्प्लायंस दिया गया है टू रिपोर्ट ऑन कैरो रिपोर्ट करना है, वो कैरो रिपोर्ट ही नहीं दिया ऑडिट रिपोर्ट देते समय, एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से कुछ कॉम्प्लायंस दिया है, जब ऑडिट करते समय स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्लायंस नहीं किया है, कोई भी वायलेटेड है, इट में डिसाइड टू फर्दर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन and through its concerned division, whatever it is, if it is enforcement करना है, investigate करना है, जो भी चीज़ है वो concerned division से आपको investigation करेगा. Power to investigate, उसके बाद है power to investigate on any professional and other misconduct under section 4 of 132. कोई professional misconduct है, आपने non compliance किया है, standards follow नहीं किया है, और कंपनी लॉ में जो रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्लायंस बोला है ना, उससे कॉम्प्लाई नहीं किया है, वो सारा चीज़ में आपको इन्वेस्टिगेशन में कर सकते हैं. प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान के, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है, आपने ऑडिट किया, ओपिनियन नहीं इश्यू किया है, वो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है. यू हैव ड्यूटी टू रिपोर्ट, यू आर नॉट कॉम्प्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन, वो सारा चीज़ में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या आता है. अपने विदाउट ऑब्टेनिंग द इनकमिंग ऑडिटर का जो NOC है वो बिना ऑब्टेन करके आपने एक्सेप्ट कर दिया. पहले जो NOC ऑब्टेन कर रहे हैं, सॉरी एक ऑडिट फॉर्म में एक्सेप्टेंस दे रहा है, पहले आप पिछले ऑडिटर के NOC ऑब्टेन करना जरूरी है. ये मैंडेटरी कॉम्प्लायंस है. NOC मतलब आप ऑडिटर के अपॉइंट हो ना, मुझे नो ऑब्जेक्शन, मेरा जो भी चीज़ है वो क्लैरिफाई हो गया, मतलब मेरा रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गया, फाइल सबमिट हो गया,
सारा चीज़ है, मेरा फीस ड्यू पेड हो गया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आप अगर ऑडिटर में अपॉइंट हुआ है तो। ऐसा एक एनओसी लेना है जो आउटगोइंग ऑडिटर जो है उसके से। सो वो सब नहीं लिया है, आप एनओसी बिना लेके आपने अपॉइंट किया है, क्या होगा, वो भी एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ही होगा। आपने प्रोफेशनल रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं किया है, जो ऑल दोस प्रोफेशनल रेगुलेशंस विल बी अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय एनएफआरए, अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉम्प्लायंस और ओवरसाइट एक्टिविटीज। सो समटाइम्स क्या होगा, कॉम्प्लायंस चेक करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन अंडरटेक करेगा, ओवरसाइट एक्टिविटीज इसको रिव्यू करने के लिए जो भी एक नया पॉलिसी एस्टैब्लिश किया है, हम एक लाइन एक नया कंट्रोल लेके आया है, एक स्टैंडर्ड लेके आया है, सारा कंपनीज कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारा ऑडिटर्स उसको चेक कर रहा है या नहीं चेक कर रहा है, वो चेक करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कनेक्ट कर सकते हैं। एक न्यू मैटर और कॉम्प्लायंस ओवरसाइट एक्टिविटीज, ओवरसाइट मतलब सुपरविजन एक्टिविटीज, एनफोर्समेंट सुपरविजन के लिए, एंड अंडरटेक सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन। क्या अभी सिचुएशन के हिसाब से बोला है, पहले इन्हीं मिसकनेक्ट है तो नेक्स्ट एक ओवरसाइट एक्टिविटी या कुछ कॉम्प्लायंस चेक करने के लिए कर सकते हैं। अभी सुओ मोटो कुछ भी सिचुएशन की जरूरत नहीं है, इट वांट्स इट कैन वॉलंटरी एट इट्स ओन पावर इट कैन कंडक्ट एनी इन्वेस्टिगेशन ऑन द मैटर ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। देन इफ ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ है, कुछ एविडेंस मिला है टू बिलीव दैट द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट हैज नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट। अभी क्या मिला है आपको, एक एविडेंस मिला है कि यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द एक्ट। देन क्या होगा, you have committed some fraud of more than 1 crore, it shall report the finding. You have not complied and there is a fraud of more than 1 crore, then it shall report all the findings to central government. All the non-compliances, and in case of any fraud, the fraud is more than 1 crore, then the same issue will be reported to central government by NFRA. On the commencement of these rules, professional misconduct as referred to in Rule 3 shall be initiated by authority, no other institute or body. सो अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अगेंस्ट ऑडिटर के अगर ये अथॉरिटी इनिशिएट किया है, कुछ और बॉडी ऑडिटर के अगेंस्ट और एक सेम इश्यू के अगेंस्ट इंक्वायरी और एक्शन इनिशिएट नहीं कर सकता। अगर एनएफआरए इनिशिएट किया है तो एनएफआरए करने के बाद कोई और इंस्टीट्यूट, अगर एनएफआरए किया है बाद में आईसीए आके हमारे पास सेम इश्यू के लिए एक्शन नहीं ले सकता है, वो एक बोल रहा है। अगर एनएफआरए सपोज एग्जांपल मान लीजिए 2000 हम क्या बोला है 2014 में एनएफआरए नहीं है, तब कौन सपोज आईसीए है उसको कैरी आउट कर रहा है जो भी इन्वेस्टिगेशन है। जब 2018 में ये एस्टैब्लिश हुआ है, ये टेकअप करना शुरू कर दिया तो इसका क्या होता है, एंड होना चाहिए। सो एक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल रेफर टू इन Rule 3 shall be noted. No other institute or body shall initiate any program. अगर एक NFRA इनिशिएट किया है, no other body shall initiate proceeding against such auditor. No other institute shall initiate or continue the proceedings. जब वो आया है, वो इनिशिएट किया है NFRA, shall not continue any proceedings against such matters of misconduct has initiated or under this rule. The action in respect of professional and other misconduct against the auditors and bodies shall refer to be proceeded with the Institute of Chartered Accountants other than those referred to in Rule shall continue with. So other than जो Rule 3 में मेंशन किया है वो Institute of Chartered Accountants of India कंटिन्यू कर सकता है। जो Rule 3 में मेंशन किया है जो NFRA ही कर सकता है, वो एक क्लैरिफिकेशन दिया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इधर तक आपको एग्जाम के लिए ये 2 पेज हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से पढ़ने से आपका अगर टाइम अच्छा है तो इसमें एक क्वेश्चन 2 पेज में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। हर 2 अटेम्प्ट के बाद एक एनएफआरए का क्वेश्चन आता है, इतना इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। इसलिए ये 2 पेज आपको ध्यान से पढ़ने, आप इतना टाइम भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं होता है। अगर आप पॉइंट्स रिमेंबर कर दिया, कैसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या क्या किया, क्या पावर है इसके पास, क्या इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, क्या क्या चेक कर रहा है, ऑडिटर का क्या कॉम्प्लायंस है, एनएफआरए क्या चेक कर रहा है, वर्किंग पेपर्स चेक कर रहा है, और कोई स्टैंडर्ड में कॉम्प्लायंस होगा वो चेक कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसके ऑफिसर के साथ इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन का क्या पावर है, वो सारा चीज़ आप एक बार पढ़ने से समरी आप समराइज करके 2-3 पॉइंट इतना, मतलब
इतना 4-7 पॉइंट में अब एटलीस्ट 5 पॉइंट याद रखना चाहिए, उतना तो लिखना पड़ेगा आपको। अगर अच्छा है आप 8 में 8 पॉइंट लिखने से। ये भी हो गया। अगर हमारे पास टाइम भी नहीं है, ठीक है आज इधर ही एंड कर देते हैं।